direction along the line joining them. Car A with constant acceleration A equal to 4 meter per second square, while car B moves with constant velocity 1 meter per second. At time t equal to 0, car A is 10 meter behind car B. Find time when car A overtakes B. Okay, so what we have, if you make the diagram, we have car A and second we have car B. Okay. Starts moving. Okay, so that is given at instant t equal to car A is 10 meter behind. So car B is here 10 meter behind. So car A is here and car B is here, 10 meter gap. And the acceleration, A has constant acceleration 4 meter per second square, while starting from rest, car has constant acceleration while car B moves with constant velocity. B has constant velocity 1 meter per second. Find the time when car A overtakes B. So to overtake, the distance traveled by A must be equal to distance traveled by the position of B. The position of A must be equal to position of B. So whatever is the relative distance between them, that has to be covered with this acceleration and velocity. Okay, so relative distance is, suppose we write S equal to ut plus half at square. Okay, so if we write F equal to ut plus half at square for relative motion. So if we write this for relative motion, so how much we will write for A with respect to B? We will write A with respect to B. Everything A with respect to B. Okay, so how much displacement the A should have with respect to B? 10 meter. How much velocity A had, initial velocity A had with respect to B? See, B is having velocity, A is not having any velocity. A is starting from acceleration, but it is no velocity is given. So velocity of A with respect to B is 0 minus 4. Sorry, 0 minus 1, not 4. 0 minus 1 into time t, and then half acceleration of A with respect to B, that is 4. Acceleration of A is 4 and B is having no acceleration, so minus 0. So this is the relative displacement, because A has to travel with respect to B, A has to travel extra 10 meter. This is initial relative velocity. The relative velocity of initially the A was having 0, it is having 1. So 0 minus 1, and acceleration of A with respect to B. So 4 minus 0. So we can write 10 equal to minus t, and then this is minus 2t square. Okay, so it will be 2t square plus t plus 10. This equal to 0. So this we have to solve. So t will be equal to how much? Minus 1 plus minus t square. So 1 square, then minus okay, so we are getting what? Minus, this is minus t, and this is this, okay, this is plus है यहाँ पर, प्लस, ठीक है, ये प्लस हो गया, तो प्लस 2t स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस रह जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और होगा 4 इंटू 10 इंटू 2, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस, देखिए ये 81 है, तो 81 का रूट 9 हो गया, 9/4, यानी कि कितना हो गया, अगर हम इसको माइनस तो नहीं कर सकते, प्लस ही करना पड़ेगा, 8/4 यानी कि 2 सेकेंड पर ओवरटेक करेगा, ठीक है। इस तरह से करना होगा, या फिर आप देखिए, ये तो रिलेटिव टू कॉन्सेप्ट से किया हमने, आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय फर्स्ट पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट बाय फर्स्ट पार्टिकल हो जाएगा हाफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, हाफ 80 स्क्वायर, और दूसरे का पोजीशन कितना होगा, दूसरे का पोजीशन हो जाएगा, पहले से ये 10 मीटर आगे है तो 10 और हो जाएगा प्लस vt,
ये कर दीजिए, ठीक है। तो दोनों बराबर होना चाहिए, एक्स ए मस्ट बी इक्वल टू एक्स बी। ऐसे भी कर सकते हैं, बात यही है, ठीक है। एक्स ए मस्ट बी इक्वल टू एक्स बी, तो ये हो जाएगा कितना, हाफ एटी स्क्वायर इक्वल टू 10 प्लस वीटी। इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी किया जा सकता है, यही वही चीज आएगा, सॉल्व करेंगे तो सेम चीज आएगा।